everyone, I am Dr. Swati Sreshi dealing with oral pathology, developmental disturbance of lips and palate, cheilitis, granulomatous, Miescher and Melkersson syndrome. और granulomatous inflammation क्या है? ये है chronic swelling of lip. और अब हम लोग जानेंगे Miescher cheilitis term as granulomatous change. ये क्या है? Term as granulomatous change up to the lip. Changes are confined to the lip. और ये जो Miescher है वो generally regarded as non-symptomatic form of Melkersson-Rosen syndrome. Non-symptomatic form of Melkersson-Rosen syndrome. Melkersson-Rosen syndrome cheilitis occurs with facial palsy and plicated tongue. Manifestation of cons, ये Melkersson-Rosen का ही बता रहे हैं. Manifestations of Crohn's disease or oral facial granulomatosis. Crohn's disease, C-R-O-H, Crohn's disease or orofacial granulomatosis. अब हम लोग आएंगे इसकी एटियोलॉजी में. हम लोग आएंगे एटियोलॉजी में क्या है? एटियोलॉजी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग may exist in Melkersson-Rosen syndrome. Siblings have been affected. इसमें क्या होता है? Siblings affect. Siblings have been affected. Applicated tongue may be present. Plicated tongue present. Etiology में है plicated tongue present. Crohn's disease and sarcoidosis and orofacial granulomatous may present in similar fashion. Crohn's disease and orofacial granulomatosis and इसमें एक और जोड़ लीजिए sarcoidosis present in similar fashion. ये present होता है. एटियोलॉजी में क्या हो गया? प्लिकेटेड टंग हो गया. और दूसरे में हम ये भी लिख दिए Crohn's disease and orofacial granulomatous and sarcoidosis present in similar fashion. Dietary or other antigens are the most common identified cause of orofacial granulomatosis. क्या है? Dietary and other antigens. Dietary and other antigens are most common identified cases of orofacial granulomatosis. अब हम लोग आएंगे cheilitis granulomatosis. It is episodic with non-tender swelling and enlargement of the lip.
of the lip. Upper lip involved slightly more than the lower lip. Upper lip more slightly than the lower lip. After recurrent attacks, swelling may persist and slowly increased in degree, if eventually become permanent. परमानेंट भी हो सकता है अगर स्वेलिंग में परसिस्ट, अगर स्वेलिंग परसिस्ट हो जाए तो इंक्रीज इन डिग्री हो जाए तो इवेंचुअली बिकम परमानेंट. इट इज सॉफ्ट फाइन और नॉडुलर पाल्पेशन. सॉफ्ट फाइन एंड नॉडुलर इन पाल्पेशन. अब हम लोग आएंगे फेशियल पाल्सी. फेशियल पाल्सी 30% केसेस होते हैं. ये यूनिलैटरल और बाइलैटरल बोथ. और इसमें अदर क्रैनियल नर्व ओकेजनली अफेक्टेड. एग्जाम्पल अदर क्रैनियल नर्व occasionally affected is olfactory, auditory, hypoglossal, glossopharyngeal and glossopharyngeal. ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस में एकर. इसमें और क्या होगा? ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस में अब हम लोग आएंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस. इट इंक्लूड्स इंसेक्ट bites and sarcoidosis. अब सार्कोइडोसिस में हम लोग क्या करेंगे? सीरम एंड एंजियोटेंसन, सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टेस्ट. angiotensin converting enzyme test, chest radiography, chest radiography और गैलियम और पेट जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन इमर्शन टोमोग्राफी. पॉजिट्रॉन इमर्शन टोमोग्राफी. अब हम लोग इसमें क्रोन्स डिजीज के जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंडोस्कोपी. Tract endoscopy, gastrointestinal tract endoscopy and radiography अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट हिस्टोलॉजिक फीचर. अब हम लोग आएंगे हिस्टोलॉजिक फीचर पे. इसमें क्या है? consist of a chronic inflammatory cell infiltrate, particularly peri and paravascular aggregations of lymphocytes. Peri and paravascular
vascular aggregations of lymphocytes and plasma cell, lymphocytes, plasma cell, and histocytes and focal non-casseting granuloma formation with non-casseting granuloma formation with epithelial cells and Langerhans type Janssen and Langerhans type Janssen. So histocytes and focal हिस्टोसाइट्स में एंड फोकल नन कैसेटिंग ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन विथ एपिथेलियल सेल्स एंड लैंगरहांस टाइप जैन सेल। अब हम लोग आएंगे ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? पहला पैच टेस्ट you may be used to help exclude reaction to metals, food additive and other oral antigens अब हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी में मैनेज्ड बाय इंट्रालेजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। इंट्रालेजनल corticosteroid injection, non-steroidal anti-inflammatory agent, non-steroidal anti-inflammatory agent, mast cell stabilizer, clofazimine and tetracycline. Clofazimine and tetracycline। इसमें फिर क्या है? सर्जरी and radiation to be used। थैंक यू। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।